This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Veda. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्षिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्षिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा को गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से समझने समझाने का ये जो हमारा यज्ञ है, ये अनवरत रूप से आपके समक्ष हम रविवार सायंकाल 6 बजे लेकर उपस्थित होते हैं। और इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के सीनियर प्रोफेसर रामनाथ जी झा। ऋषिकेश से हमारे साथ होंगी गीता की निष्णात अध्यापिका, अध्येता, जिज्ञासु और जापानीज भाषा में संस्कृत का हमारा जो वांग्मय है इसको पढ़ाने वाली आचार्य राधा जी हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ रही हैं। और साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे हुए और एमिनेंट कॉलमनिस्ट मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीमान विठल जी नाडकर्नी। भारतीय मूल के मशहूर वैज्ञानिक, एमिनेंट साइंटिस्ट और इन दिनों अमेरिका रहने वाले प्रोफेसर बलराम सिंह जी हमें यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं। बेंगलुरु से हमें ज्वाइन करेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम जी दर्भा। और भारतीय मूल के ही इन दिनों अमेरिका रहने वाले प्रख्यात प्राध्यापक, एमिनेंट प्रोफेसर अनिल जी भाटे यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही सीनियर आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे श्रीमान जेके दादू जी हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह से हम हमारे एमिनेंट पैनल्स के पास चलें, इससे पहले आज के एपिसोड का एक सारांश हम आपके सामने रख रहे हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं अध्याय 8 चल रहा है इस वक्त, और आज जो विवेचित होने वाले श्लोक हैं वो है श्लोक संख्या 11 से 14, श्लोकास 11 to 14। और आज विवेचित होने वाले जो 4 श्लोक हैं ये सब चारों के चारों श्लोक परम दुर्लभ जो योग है उसको बतलाने के लिए ये 4 श्लोक विलक्षण श्लोक माने जाते हैं। और हम सब के लिए जो दुर्लभ योग है वो कौन सा योग है? वो योग है परम पद की प्राप्ति। यहां आज भगवान अपनी वाणी में अत्यंत दुर्लभ पद, परम पद की बात करने वाले हैं, किस तरह से परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। और आज का एपिसोड इसीलिए विलक्षण है। और स्वर्गवादी सुखों के भी पार, यानी कि परमात्मा के ही अविनाशी पद में प्रविष्ट होने की जो बात है, विधा है, जो हमारे वांग्मय की एक एक्सक्लूसिव बात है, वो आज प्रकट होने वाली है। और यहां आज भगवान श्री नाम स्मरण का भी महत्व बताने वाले हैं। आप देखिए जरा, आज के इस दौर में, आज के इस जमाने में, जब पैराडाइज और जन्नत के नाम पर, जन्नत में, पैराडाइज में मिलने वाले सुखों के आधार पर लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, ललचाया जाता है, लेकिन हमारे इस भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा के इस विलक्षण आधारभूत तत्व को देखने की वाली बात आज रहेगी। और यह तत्व है परम पद। आज हम हमारे विद्वत पैनलिस्ट से समझेंगे कि यह परम पद क्या है और यह हमारे ही दर्शन परंपरा की एक अनोखी थाती किस प्रकार है, किस तरह से है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आचार्य राधा जी, प्रोफेसर रामनाथ जी झा, विठल जी नाडकर्नी और श्रीराम जी दर्भा और अनिल जी भाटे और श्रीमान जेके दादू जी। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि प्रोग्राम की रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, आज विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं अध्याय 8 के, चैप्टर 8 के श्लोकास 11 to 14, श्लोक संख्या 11 से 14 पहले रिसाइटल होंगे, इसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत होगी। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः
अर्जुन उवाच यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरान् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और झा साहब के पास चलते हैं। झा साहब स्वागत है, नमस्कार। जी सभी को मेरा प्रणाम। और जैसा कि चर्चा हो रही है कि जो 7वां प्रश्न है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोस नियतात्म भी, उसी की व्याख्या आगे चल रही है। इसी क्रम में भगवान जो हैं वो एक तरह से कठोपनिषद में जो एक मंत्र आया है कि सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। इसी बात को भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतियो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थात संपूर्ण वेद जिसकी व्याख्या करता है और जितने वीत राग लोग हैं, जो बिल्कुल राग से रहित हो चुके हैं, निश्चल हैं, वो अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं और जिसको उद्देश्य बना करके जो जिज्ञासु लोग हैं वह गुरु के समीप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद का मैं संक्षेप से आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रह्मचर्यम के 2 अर्थ होते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो ज्ञान में जो विचरण करे, इसीलिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की बात आती है कि वो ज्ञान को ही आधार बना करके जीवन व्यतीत करते हैं। और दूसरा ब्रह्मचर्य, जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय जो विवाह संस्कार से पहले की जो अवस्था है वह भी ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि यह जो तत्व है उसी तत्व की व्याख्या मैं आगे संक्षेप में कर रहा हूं। और प्रश्नोपनिषद का भी यह 5वां प्रश्न है, जहां की सत्यकाम जो है वो पिप्पलाद से प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य में जो मरण पर्यंत ओंकार की उपासना करता है, ध्यान करता है, उससे उसको क्या प्राप्त होता है। तो इस पर पिप्पलाद जो है वो कहते हैं कि जो त्रिमात्र ओम शब्द है, जो ओम में 2 चीजें हैं, एक तो आकार, उकार और मकार, ओ मिलके ओ होता है और म होता है तो ओम हो जाता है। तो एक तो ये 3 मात्रा वाला ओ म मात्रा वाला जो ओम है उसकी जो उपासना करता है, और उसके 2 पक्ष हैं। एक तो 3 मात्रा से 3 जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण ब्रह्म का ज्ञान होता है, और जो उससे परे जो अभाषिक है, जिसको केनोपनिषद कहते हैं कि यद वाचा न व्युदितम येन वाग अभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वह यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी नहीं जाती, तो वह जो परम ब्रह्म है, वह जो चतुष्पाद में 4था पाद है, जिसको कि किसी मात्रा से नहीं बताया जा सकता, इन दोनों को ध्यान में रख के जो उपासना करता है वही परम तत्व तक पहुंच पाता है।
और इसमें जो 3 मात्रा है उसमें भी 2 तरह के हैं। एक तो ओम में अ उ म को मिलाकर ओम हुआ, दूसरा एक प्रतीक ओम है। जिस ओम को हम देखते हैं कि अ लिखते हैं और फिर पीछे से उसको गोला लगाते हैं, तो वह ओम प्रतीक है जो उपासना के लिए है। और दूसरा जो ओम है अ उ म वाला ओम जो है उसको वाचिक ओम कहते हैं। तो जो उपासना या प्रतीक के रूप में ओम है, उसी की साधना, उसी की उपासना करते हुए लोग परम तत्व तक पहुंचता है। और इसको हम थोड़ा सा जितना मैं समझ पाया हूं कि अ जब लिखते हैं तो 3 आगे का डंडा लगा रहता है, तो वो तीनों जो है वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण को बताता है। और जो पीछे जो ऊ की मात्रा है उसमें नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि अ उ म जो आगे का 3 डंडा है वह तो वो सूक्ष्म जो पर ब्रह्म को बताता है, और पीछे जो गोला लगा हुआ है वह संसार को बताता है। और उस संसार में स्थूल, सूक्ष्म और कारण सभी है। और ऊपर जो चंद्रबिंदु जैसा रहता है वो शक्ति है जो कनेक्ट करता है पर ब्रह्म को अपर ब्रह्म से। इस तरह से प्रतीक रूप में जो उपासना करता है वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। और इसी आधार पर वो साधना पद्धति क्या होनी चाहिए, तो इसी के लिए आगे सर्वद्वारानि संयम्य इत्यादि श्लोक के द्वारा कि जो अपनी योग की पूरी साधना है, जो चक्र की बात हमारे शास्त्र में है कि वह सभी इंद्रियों का संयम करते हुए मन को हृदय में निरुद्ध करते हुए, उस पर केंद्रित करते हुए और सुषुम्ना के द्वारा धीरे धीरे आज्ञा चक्र को से आगे बढ़ते हुए जो सहस्रार में यानी मूर्धन्य जो तत्व है उसमें जब अपने को स्थिर कर लेता है, तो धीरे धीरे वह ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में जाता है। और वही परम आनंद की स्थिति है। और उसमें जो योगी जन जैसा बोलते हैं कि कुछ ऐसा रस का भी श्रावण होता है जिससे कि वह प्रत्येक दिन आनंद की स्थिति में रहते हैं। तो ये पद्धति को बताते हुए और अंत में फिर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वह ओम तत्व है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरम, कि इसी ओम का जो दोनों पक्ष है, पर और अपर, इन दोनों का स्मरण करते हुए, इसी का उच्चारण करते हुए और इसी के अर्थ की भावना करते हुए जो व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। और ऐसा जो योगी है जो सतत उससे युक्त है। और जो 2 शब्द इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो है कि नित्यशः और एक है सतत। सतत का मतलब जो निरंतर करता है, उसमें कोई ये नहीं कि आज करें 2 दिन छोड़ दें फिर और करें। तो जो निरंतरता है वो रहनी चाहिए साधना में। और दूसरा नित्यशः का मतलब है कि दीर्घ काल तक होना चाहिए। तो योग सूत्र में इसीलिए एक आया है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य व्यापार सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। तो जब धीरे धीरे निरंतरता और जो दीर्घ काल तक यदि करता रहता है कोई व्यक्ति, तो उसको योग सूत्रकार कहते हैं कि दृढ़ भूमि हो जाती है। फिर वह धीरे धीरे आप उसी में स्थिर हो जाते हैं और फिर किसी प्रकार का विचलन नहीं होता। और ऐसा जो योगी होता है उसके लिए भगवान कहते हैं कि तस्याहम सुलभः पार्थ, ये पार्थ उसके लिए मैं सुलभ रहता हूं। सुलभ का मतलब है कि सुखेन लभ्य अहम, कि मैं उसके लिए सुख पूर्वक मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं। तो इन बातों को भगवान ने प्रस्तुत की है और अगले चक्र में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। आचार्य राधा जी के पास चलते हैं। स्वागत है, नमस्कार। ओम जी, am I audible? Yes, loud and clear. Okay, so I'm just going to add on to what Jha Sahab said. Reminds me of a small story. एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे, Jha Sahab was explaining about remembering Ishwar at the time of death. So there was a businessman, you know. तो उसके 4 बेटे, बहुत ही जाने माने एक बिजनेसमैन थे। 4 बेटे थे उनके।
तो अब जब देह त्यागने का समय आया तो उन्होंने अपना शरीर उनका नीचे है, पंखा ऊपर चल रहा है, तो पंखे की तरफ देख रहे हैं, अपना सांस ली नहीं जा रही है, तो पहले बेटे को बुलाते हैं वो, सुरेश कहाँ है? बोला कि हाँ पापा मैं यही हूँ। बोले अच्छा महेश तू कहाँ है? बोला मैं पापा मैं भी यही हूँ। तो बोले तीसरे वाले को बोला कुंदन तू कहाँ है? बोला मैं तो यही हूँ पापा, मैं कहाँ जाऊंगा आपको छोड़ करके। तो बोला कि अच्छा तो वो हमारा छोटा बबलू कहाँ गया? बोला बबलू भी यही है पापा, कहाँ जाए, हम चारों की चारों आपके आसपास खड़े हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे? बोले अरे कम तक बकतो, तुम चारों की चारों अगर यहाँ खड़े हो तो फिर दुकान पे कौन गया है? तुम्हारा ध्यान नहीं गया वहां पर कि दुकान को कौन संभाल रहा है? So this is exactly when we talk about leaving the body. तो जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका ध्यान कहाँ पर होता है कि मेरी दुकान कौन संभाल रहा है. And when we talk about leaving the body, when it comes to a bhakta, then he remembers Om at leaving at the time of the body. तो इसी कोई 11th verse में यद अक्षरम वेद विदाह वदन्ति. तो जिस ब्राह्मण के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट ब्राह्मण इज विदाउट एट्रीब्यूट्स. उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण एज एन अक्षर, एक अक्षर के हिसाब से बोलते हैं. एंड दैट अक्षर इज नॉट जस्ट अक्षर की हमने जैसे देवनागरी वाला अक्षर कर दिया. इट इज अ प्रॉपर अक्षर विच इज ओमनिशियंट, चेतना मात्र जिसको हम बोलेंगे. इट इज ओमनिशियंट, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पर है, हर समय पर है. सेल्फ एवल्जेंट ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं कि तेजस है. एंड ही इज इटर्नल. वो उन ओम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं. अक्षरम में इट इज द सेम ईश्वर जो हमने 3rd वर्स में देखा था ऑफ द सेम चैप्टर. सेम ईश्वरा इज टॉक्ड अबाउट हियर विदाउट एट्रीब्यूट्स एज अक्षरम. Now see, and this verse talks about the great sannyasis. Now, who are mentioned in the Vedas, the great sannyasis and the tattvavids and people who have understood the Akshar Om and they meditate upon, जिनके ऊपर वो निधि व्यासनम अपना करते हैं and पूरी जिंदगी अपना ब्रह्मचर्य को संभाल करके रखते हैं. We are talking about that particular Om here. This is mentioned very clearly in the Vedas, and these people are very away from any kind of raga of samsara. The 12th verse it talks about the leaving body at the time of death. Now it says that at the time of death, जब death आपके नजदीक है, तो अगर आप actions करने बंद कर देते हैं, then you will gain a control over your ज्ञानेंद्रिय and your कर्मेंद्रिय. आपके ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के ऊपर जैसे कंट्रोल आ जाता है, then you will also have a control on your mind. So when you have a control on your mind also, then you can easily fix it between your eyebrows. So here between your eyebrows it is talked about. योग धारणम जो वर्ड इसमें यूज कर रहे हैं, that is practicing this entire concept of fixing your thought process here between your eyebrows, जिसको हम योग साधना भी बोलते हैं, उसको हम योग धारणम के हिसाब से यहाँ पर बोल रहे हैं. Now this will come in 3 processes. First is that you gain a control on your senses, your jnanendriya and karmendriya. Second is that you have a control on your mind, and the third is that you fix it here between your eyebrows. The 13th word talks about Om. Now see, what is Om? अभी झा साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है about the 3 syllables that Om has. I'm going to add in a few things here. Om जो होता है ना, उसमें 3 साउंड होते हैं. तो एक साउंड होता है अ का, एक होता है उ का, और तीसरा साउंड होता है म का. तो जो अ का जो साउंड होता है, that we start from the navel, we pick it up from the navel. जो ऊ का साउंड होता है, that we take it from the neck, from the throat. And जो म का जो साउंड होता है ना, that we chant in the mouth, it goes towards the shiras, it goes up to the upper palatal. So these are the 3 basic sounds. Now a is also the sound, the first sound that comes when you open your mouth. आप मुंह खोल करके पहला साउंड जो निकालेंगे होगा आ. फिर जो आप मुंह बंद करके आप जो साउंड निकालेंगे, that will be ma. अब इन दोनों के बीच में जो आया, that will be u. So when we join this a, u, ma, it becomes Om. Now a also stands for mass creation. इसका मतलब mass creation भी होता है. U means mass sustenance and ma means mass dissolution. तो इसके अंदर तीनों ही आ गए हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आ गए हैं. We can call it that way also, and we can also call it that from mass creation to sustenance to destruction, everything is in Om.
अब ये हमने जो 12th वर्स में देखा दैट यू हैव टू फिक्स योर माइंड बिटवीन योर आईब्रोज, देन व्हाट डू, आपने माइंड तो यहाँ पर फिक्स कर लिया, उसके बाद में आपको ओम की चैंटिंग करनी है, देन दैट इज द वे यू लीव योर लास्ट ब्रेथ. ओम की चैंटिंग करना इज a practice that involves years and years. It is not easy. आप अपना आलती पालती बैठ करके और ज्ञान मुद्रा बना करके ओम की चैंटिंग कर रहे हो तो ऐसे नहीं होता. ओम की चैंटिंग नहीं कर सकते आप. उसके लिए जो है आपको कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है. तो जो पहला साउंड जो हम अ का उठाते हैं वो हम अपने नेवल से उठाते हैं. एंड जब आप स्टार्टिंग में इसको करेंगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट अप फ्रॉम द नेवल बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये प्राण पान वायु को संभालना बहुत मुश्किल होता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले अ लिटिल बिट ऑफ इट सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट ओम वी आर टॉकिंग अबाउट. The first sound that we pick up is a. It starts from the navel and it goes like जैसे आप गरारे नहीं करते उस तरीके से ये साउंड आता है. The second sound comes from the throat. It comes right from here and then it comes like and the third sound which we that is the sound of ma, वो आपका upper palatal में जाएगा और यहाँ तक, इसको हम शिरस बोलते हैं, शिरस से बाहर आता है. So it will give you humming in your mouth like when we combine all these three together then it becomes om like this. तो ये जब बच्चा पैदा होता है वो कहाँ से पैदा होता है? नेवल से. नेवल से लेकर के और आत्मा कहाँ से बाहर जाती है? इट गोज आउट फ्रॉम द शिरस. सो द एंटायर बॉडी इज एक्चुअली डिस्कस्ड एज फ्रॉम नेवल टू योर शिरस. तो यही हमारा पूरा शरीर और इसी के अंदर ही ओम चैंटिंग की जाती है. दिस वे इफ यू चैंट एंड देन यू लीव द बॉडी then it is said that then the atma comes out from the 10th door. It comes out from the 10th door and it you call that moksha. That is the process. The 14th verse talks about the ananya chetaha. Here we are talking about worshippers who worship with the name form, like Lord Shiva के भक्ता है, Lord Krishna के भक्ता है, Lord Ganesha के भक्ता है, सबके जो भक्ता हैं, that is given here as ananya chetaha. Then satatam is a word which means in continuation. अब सततम का मतलब ये नहीं है कि आपने वीकली जाकर के भगवान जी के मंदिर में जाकर के घंटा बजा दिया या मंथली आपने कोई फास्ट रख लिया, ईयरली आपने कोई पूजा कर ली. नो, सततम means that you 24/7 you are with Ishvara. Nityashaha means forever. From the time you know Ishvara till the time of your death, you always remember him. That is Nityashaha. Nitya Yukta here means the one who is absorbed in Bhagwan with total shraddha and faith. And this is the faith and shraddha which drives him 24/7 into all the karmas that he is doing. It is not that I am going to do this karma and then I am going to remember God. No, but he remembers God and then does his karma, which happens in an auto mode. To explain this, I am going to give a small verse from the Bhagavat, which is Mai Nishvadha Hridayaha Sadhava Samadara Shanaha Vashe Kurvanti Mam Bhaktya Satyati Payatha. The way a married woman enslaves her husband with the love and bhakti, a sadhu enslaves me with this love and bhakti. So this is exactly what we are talking about here. Now in these 4 verses, we have summed up the meaning of, first is Brahman, which comes as Akshara Brahman. Then we have also seen him as Ishvara. That means in the 14th verse, we have seen him as Ishvara with form, name, given names, whatever names you are you believe in and you want to do your bhakti. And then the 14th verse also talks about the love of a bhakta, which means that bhakta ka jo pyar hai wo auto mode mein nikalta hai towards Bhagwan. It is not a normal person's love or faith. What happens for a normal person's love or faith? आज तो मुझे तुम में बहुत विश्वास है, तुम मेरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, और कल को कुछ अच्छा नहीं चला तो तुम कौन हो? तुम तो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो. That is what a normal bhakta does. Yeah, so this was not what we are talking about in the 14th verse. We're talking about a bhakta who is 24/7 with Bhagwan. I'll pass it on to you, Sharma ji. जी,
तो नाडकर्णी साहब के पास चलते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। Namaskar, namaskar. I'm going to start with a little unfinished words from last week. Last week, mention was made in passing of Gorak Dhanda, a phrase used for something intricate, complex, or labyrinthine. There is yet another angle to the usage found in the proverbial phrase, Dunya ek Gorak Dhanda, which suggests that the world or life transcends human understanding. In other words, life is never easy, but to add a caveat in our present program, without a guru or a guide such as Sri Krishna to illuminate the way. That is taken for granted. That with the help of a enlightened master, a heroic Arjuna is able to illuminate himself and do the right thing at the battlefield of life. What is interesting, I want to inform our learned audience. Last August, the state government in Haryana banned the usage of Gorak Dhanda as a synonym for unethical practices in their official communiques. The Chief Minister took this decision after meeting a delegation of Gorakhnathi community members. That should suffice as a clarification from last week. Now coming to the verses 11 to 14, I would like to also add that instead of complicating the kriyas or the processes for attainment of Kaivalya, again Sri Gorakshanatha is supposed to have purified and simplified the path of the Nathas. As is seen in this beautiful verse in the Hatoika Dipika, Ashakya Tattva Bodhanam Mudanam api Sammatam Prokta Gorakshanathena Nadopasana Uchyate. Now what Acharya ji so beautifully illustrated with the threefold unfoldment of the Pranava Swarupa, of the Nada, this was enunciated very beautifully by Gorakshanatha. And it is said that Sri Adinathena Sapadakoti Laya Prakara Katitha Jayanti. 1.5 crore methods of attaining Laya were outlined by Sri Adinatha. But Gorakshanatha said there is only one. You know the beautiful Omkar Swarup that was illustrated just now. Nada Anusandhana Ekameva Manyamahe Mukhyatama Layanam. Now, Nada Anusandhana, or focusing on the mystical inner sound, is a direct way of attaining Manolaya or the Unmani state of the equilibrium. For the effectiveness of this method, sages and experienced sadhakas say that it leads to the state of Purnatvam, which is the so-called fullness of the kumbha or the pot inside and out that is immersed in space. You know, the beautiful verse again, Anta Shunyo Bahishunya Shunya Kumbha Ivambare. Ambar mein jo lakha hua hai. Similarly, Anta Purno Bahipurno Purna Kumbha Ivar Nave. So जैसे समुद्र में हम पॉट रखते हैं तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी. So it is that state of unification with the Paratattva that these beautiful verses are talking about. And to add a little flourish to this, as a matter of historical record, the great Siddha Shri Gorakshanath was the Parama Guru of Sri Sant Jnaneshwar Maharaj Ji of Maharashtra, who has commemorated the master in the 18th chapter of his commentary on the Bhagavad Gita as Vishaya Vidvamsaka Viru Yogabjini Sarovaru Sri Goraksharayu. So, the heroic destroyer of objects of desire, Master Goraksha is the very epitome of the lake of perfection where yogic lotuses bloom perennially. Now, this is a poetic, beautiful encapsulament of the Master's grace. For this is indeed the lake of dispassion that the Lord and those who know the secrets of Vedas call Akshara are mentioned in the verse number 11.
those that are desirous of that supreme Akshara state have to walk the path of utmost self-control. Having gone beyond the poison offered by the objects of sense and having expatiated the organs in the body and sitting unmoving like verily like the trees in the shade of which the brahmacharis sit in meditation, says Jnaneshwar Maharaj. The verse 12 then describes the poses or the stances that are necessary, controlling all the gates of the body, with the mind confined within the heart and the life force in the head established firmly in yogic concentration. That is the state when prana becomes pranava for the seeker. Then, remembering the divine in the form of the single letter Om, which encompasses the Akshara Brahman, the yogi may cast off his body to go to the highest position, is what the Lord tells his disciple in the 13th verse. And whosoever, constantly thinking of me, and none other, reaches to my infinite grace, says the Lord in the 14th verse. So, to those who are Nitya Yukta, the Lord is easily available. And for them, there is no going back to the pains and travails of life and recurring cycles of birth and death, says the verse that is going to come in our next. Just one little addition to this Vivechan. Bhruvo madhe shivastanam manastatra vilayate nyatvam tat padam turyam tatra kalo na vidyate. Now, this space, this Kedara space, is where it is also described in the yogic tradition as Shivasthana, where the mind can be made to go to sleep, where then the so-called state of Turiya rises, and you are then beyond time. Kalo na vidyate. I shall wait for my turn in the next, because there are beautiful other layers of meanings attached to the Nadopasana or this Omkara, cultivation of Omkara, which I will offer in the next round. Thank you. Right. तो चलते हैं दरबा साहब के पास में. स्वागत है आपका. नमस्कार. Namaskar, Hari Om. Hari Om. Today is a very profound subject, actually, talking about Om, and so nicely started with Jha Sahab, and he has given the reference to the source from which this particular shlokas are taken. From all the Upanishads, actually, starting from Katha, Prashna, Mandukya, Chandogya, all four, there is a mention about, and Vistar Roop se, and followed very nicely by Radhaji with an anecdote which I actually wanted to share today. And because my focus has been on the mundane life, and then, how difficult is it. So it is not like, so even in the Sanskrit Bhasha, maybe, of course, so Jha Sahab jante hain, more than me, that there are two always meanings. One is the Vachyardha, the other is the Lakshyardha. In anything what we take. Of course, we go a little deep into it in a Vedantic this thing, and then Vyakaran mein jayenge, to there are things like Jahadal Lakshana, Ajahadal Lakshana, and Jahad Ajahadal Lakshana, like that. And there was a lot of explanation about this Lakshyardha and then Vachyardha. So in the first two slokas, Lord has explained beautifully what kind of people it is possible to know the real form of me, and then how do they get to know. And he has given a practical lesson here. Not only the concept, he explained the concept as well as the practical solution and the way forward. So what kind of people and how do they reach or understand the Parabrahman, that is Om Ityek Akshara Brahma. It is also said in even in the Sanskrit Varnamala and then alphabetical, is that there is no alphabet which is not worthy of a mantra. No Aksharam, Parama Mantram or something like that is there. So that is every Akshara is an indestructible form.
Actually, the name itself is Akshara, that which is non-perishable, is an Akshara, is an alphabet. That is the significance given in the Deva Bhasha, Devanagari, and Sanskrit. And hence, Vacha and Laksharda both have to be understood. Like Radhaji herself said, just by sitting in a posture, in a so-called, anglicized and a modern way of meditation or a yoga, all forms of yoga, there are dance yoga, there is robotic yoga, there is disco yoga. Like that, there are several yogas, sexual yogas, and all are also there. Unfortunately, in the world. So everybody is saying that is it so possible just by it is like I always share my favorite thing that E is equal to MC square. So just by chanting, will somebody attain or understand? Nope. That's what he seems to be saying that. So one is the Vachartha Om, and then it is beautifully demonstrated by her. And second is, and hence each and every person, all Tom, Dick and Harry, all sundry, just pick it up from the book and then they practice and then just sit in some kind of a kriya or art of living or something like that. You may say, or inner or outer engineering. You may give a nice label and then practice and then attain and then say that okay, I have reached samadhi and then I come back and all. So that is the temptation, and then that is the projection, one limitation one may get involved in it. So he has explained what is the sadhana, and then the abhyasa, and then the yoga, and then the seriousness of concentrating through dharana, because in the Patanjali Ashtanga Yoga there are several steps: yama, niyama, pranayama, pratyahara, and then dharana, and then samadhi. So he is talking about yoga dharana. Dharana is like keeping it stable, and then she is keeping it here in the Ajna Chakra. As I shared in our system of my daily practice of Devi Upasana, in Sri Vidya Sampradaya, the same thing, the Nada and then the Bindu Upasanas are also significant. Like Nadkarni Sahib has said, and then the other two people have also just mentioned. So, with special significance to my commitment and then my faith and practice, I would like to say that the same is said about the from Mooladhara Swadhisthana, how it reaches to the Vishuddhi and then goes to the Agnya, which is the Rudra, center, and then maybe Sahasrara with a little more, a lot more practice, which is Para, Pashyanti, Madhyama, and then Vaikhari. So this is the Nada, the Swarupa, which travels through the six chakras, and then it goes to the Ajna, and thereafter there is a possibility of taking the Kundalini through Sushumna to the Sahasrara. It could happen in one Janma, it could happen in many Janmas. But a lot of mind control, that's why the Chitta Shuddhi is required. So, like Nadkarni Sahib said, Guru is important, Upadesha, Upasana, Chitta Shuddhi, and Buddhi, and then Manas, and then control. So, he is talking about, he is not saying that, he said Navadvarani Samyamya. He never said that close all the Navadvaras that you have. So, once you close it and all, if it is not done properly, and not from a proper guru, and all, you may just, Hamsa ud jayega and then Admi mar jayega. So we have to be very carefully practice this yoga sadhana and then the yoga dharana. Otherwise, if you just say that, the mind control is extremely important. So the mind, without that, in four other places, Lord has said that prayana kale cha and then api. Antakale cha, antakale api. These api and then cha are extremely important things according to me. Otherwise, antakale, if he left it like that, okay, like we discussed last episode, last minute we just say that and then do we attain that kind of a liberation? No. That's why cha and then api are extremely important. Like Ravaji said, I was tempted to say that. Similar Lalaji, he was there and then he was on the bed in a hospital, and then they said that, he will only live for a few seconds unless we give one imported injection, which is brought from America, and then all four sons are eagerly waiting, and this old man is there, he's a miser. So at the last minute, so they brought somehow, because they were all eagerly waiting and looking at him, and then he just said ka, ka, ka. Only three things he's saying, whether he's coughing or he's saying ka, ye ka kya matlab hai? Maybe, he's talking about a treasure trove, which he has kept somewhere else, and then वो लोग घबरा गए हैं कि इसका डिकोडिंग कैसे करना चाहिए, ये का क्या मतलब है.
एंड देन दे सेड अच्छा कितना भी खर्चा होता है तो परवाह नहीं है, वो इंजेक्शन दे दीजिए, अगर 30 सेकंड नहीं है तो 10 सेकंड जिंदा रहे तो भी परवाह नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेट्स गेट इट. And somehow they bring it and then they'll give that injection to him and then he gets up and then 10 seconds he still says काका का. ये काका का मतलब क्या है काका जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो he says कौवा काटे कद्दू या कौवा कद्दू काटे. So that is why he is saying, because there is a crow, he has seen through the window and then he is there and with प्यार से बहुत गार्डनिंग करके कद्दू ने पाला पोसा है इन्होंने और कौवा जाके उसको काट रही है. So if that is the kind of the involvement or the attachment a miser has got in a life to the material pursuits, so what kind of a buddhi he will have even at antakale or prayanakale, and hence it is nitya yukta, and then satatam was a good word. That's why nirantara or satata, and it's a beautifully both of them have explained. The other thing extremely important is how difficult it is to control mind is Shankaracharya and Vivek Chudamani has beautifully given, because he says Shabdadibhi panchabhireva pancha panchatvam sogunena baddhaha Kuranga matanga patanga means Brunganara panchabhiranchita kim. That's a beautiful shloka. It says that because each one of them, the Kuranga matanga patanga meena, because that is the deer and then the elephant and the bee, bumblebee. Matanga patanga, it is also the fly, the bumblebee, and meena, the fish. And these are the 5 things which are surrendered, which are yielded by the sensory objects. Each one is falling for and dying for the weakness of one of the sensory things, like Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. And each one is dying because of one faculty. And imagine what is the plight of a human being who is endowed and bestowed with all the 5 sensory, organs, and then the temptations which are causing. So that difficult is it to control the mind. That kind of a mind control is only possible through yama, niyama, pranayama, pratyahara, and dharana, samadhi, asana, and all that. That is very clearly given. So, and another important thing he is saying that Mama Anusmaran, but what we are doing is Mama Anusmaran. That's what we are doing. Many of the time we are only involved in Mama, that is about the self. So, from Mama to Mom, I think we need to move. Otherwise, there is always a temptation of the miserly merchant, which is an Right. example which we talked about. So, that's how it works. And then Okay. the second one, probably if the time is there, Yeah, we yeah. can take up. डेफिनेटली. भाटे साहब स्वागत है, नमस्कार. Namaskar, namaskar. Well, a lot has already been explained, so I don't have to talk much, as a matter of fact. However, I will just point out some of the meanings of some of the words that I have followed in my own sadhana. So, very briefly. So, Yadakshanam Vedavido Vadanti Vishanti Yadyatayo Vitaraga. Vitaraga, I would substitute the word Vitaraga with a somewhat simpler word, Anasakta. Anasakta perhaps is a simpler word which explains Vitaraga very nicely. And Yadaksharam, Aksharam is of course Akshara, that what does not perish, so imperishable. And Veda Vido here, Veda means the yogis who have obtained wisdom, knowledge and wisdom, how they Vishanti, how do they enter the Paramapada that was mentioned by Subhashji right in the beginning. And if they want to reach the Paramapada, Ichanto, Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangrahena. Now here Brahmacharya does not mean not getting married. Brahmacharya means reaching, approaching the Brahman. That is the meaning of Brahmacharyam Charanti. Tatte Padam, that Padam, that unmanifest and imperishable divinity. If how Sangrahena, to reach there and grab it, of course. How do they do it? That is what I am explaining. That's what Lord is saying here. Sarvadvarani samyamya. Sarvadvarani. There are 9 doors in which our human body operates or
connects itself with the external reality. And these are the 9 doors. And Sanyamya means controlling them, of course. And Mano Rudhi Nirudhya. Now, Mano Rudhi Nirudhya means going beyond the mind, going into a total thoughtless condition. That is Mano Rudhi Nirudhya. So that's what they do. And Murdha Nyaya Nyaya Tumnaha Pranamasthito Yogadharanam. Darbha already explained dharana. So yoga dharana, that's what is mentioned here. And Murdha Nyaya, what happens is the Om Akshara, as mentioned in the shloka number 13, has already been explained in terms of Nadanusandhana. But my own experience is that for me, I never chanted Om. For me, Om always referred to Kundalini Jagrati. And so the Kundalini rises, as explained by Darbha, through the spinal cord, goes up to the Ajna Chakra, and then beyond that goes into the Sahasrara Chakra, and then reaches the Brahmanandra. So that process is what is meant by the symbol Om here. That's what I mean. That has been my practice. Yade Ityaksharam Brahma. Now what you see, Pranamasthito, prana has multiple meanings. See, when yogis practice pranayama, then prana deals with breathing. But prana also refers to energy, Shakti. And so what happens is, when the Kundalini reaches up to the Ajna Chakra, in between the 2 eyebrows, that means the Shakti gets focused, and Murdha Nyaya, and then that Shakti goes up to the Talu bolte hain na, top of the head, where Brahmanandra is situated. So that condition is Pranamasthito. And when you reach that condition, you go beyond the mind. Mind stops. You go in a total Nirvichar Avastha, and there is no thought. And as the thought vanishes, the mind itself vanishes. And that is the meaning of what is mentioned here. And then people who can reach that Brahman by focusing the Shakti in the Brahmanandra, for those, the Paramapada, that is the unmanifest and imperishable divinity of Bhagavan, is available. That is what is mentioned. So that's all what I wanted to say, Right. based on my own personal experiences. राइट दादू साहब के पास चलते हैं. स्वागत है आपका. नमस्कार. सुन पा रहे हैं क्या? Namaskar. Extremely sorry that I couldn't join last time. Esteemed professors, scholars, I don't have any words to describe the literal and the interpretation of all these professors and scholars' prayer. As I mentioned, I am a practitioner of life, and based on that, I want to make 2 separate आपका statements. 1 मिनट रोक रहे हैं आपको. हाँ, 1 मिनट रोक रहे हैं. आपका जो स्पीकर है, इसको थोड़ा सा दूर करिए आपके कोट से. ये टच हो रहा है तो साउंड दूसरी आ रही है. Okay. So first thing I want to say is that I saw a serial on the TV called Har Har Mahadev, Vedo Ki Dev Mahadev. That talked about the meaning and significance of 2 of the Jyotirlings, Omkareshwar and Mahakaleshwar. Now, I want to bring this matter in this episode because I find it very relevant, because while anybody who goes to Indore wants to go and visit Mahakaleshwar, and more than 1,000 crores has now been spent on renovating Mahakaleshwar and making it into a great spot, very close by is Omkareshwar, and much less traffic goes there, despite the fact that the relevance of the 2
is extremely different. आपकी डिवाइस चार्ज पे लगी हुई है क्या? नहीं, डिवाइस चार्ज पे नहीं है सर. क्या गड़बड़ क्यों हो रही है? साउंड मैं क्लियर इस नहीं है, बहुत वाइब्रेशन है साउंड में. Either your speaker is connected with your attire, you know, this thing, or something went wrong with your device. No, can you hear me at all? We can hear you, but vibration is high. You can keep it like this, maybe. No, I'm not speaking on the mic. The mic is inbuilt into my iPad. So check, just check, you know, any wire is connected with your device. No, nothing. Okay, then carry on. Okay, so I will compromise. I'll keep my distance a little from the iPad and speak. So the point I was making was that a lot of people go to Mahakaleshwar because Mahakaleshwar represents the fear of death. And Mahakaleshwar, according to the serial that I saw, there was a big Rakshas who was like a Kal in Ujjain, and Mahadev appeared and killed him in seconds, and that place became Mahakaleshwar. That's all that the significance is shown in that serial. Now, if you look at Omkareshwar is spread over 3 episodes, and Meru Parvat ka jo arrogance tha, how Mahadev got it under control is what is shown there. And then he prayed that the presence of Brahma, Vishnu, Mahesh should all be there at that place, and that's why if you chant Om in Omkareshwar, that's how it got its name, you will see the presence of both, all 3, Brahma, Vishnu and Mahesh. The point I'm trying to make is Mahakaleshwar is prominent because people fear death and go there, whereas Omkareshwar, which has much more significance in terms of how it happened, is lost despite the fact that Brahma, Vishnu and Mahesh, all 3 are present there. So this is the difference that I wanted to bring out in this episode based on these 3 shlokas. Now, the second thing I want to mention is that the essence of these 3 shlokas I find in 6 gems elsewhere in Gita, which I'll quickly reel out, so that, you know, I, as a practitioner of life, I'm able to relate what I find out of these 3 shlokas. Number 1, and I'm speaking in English, I don't understand Sanskrit to the extent that all the scholars and experts here know, so I will not speak in Sanskrit at all. One of the gems is that even if there's an offensive person, but if he devotes himself to Vasudeva, he can transform himself completely. So the magnificence of the Lord comes out in this gem. Another gem I found is that if you don't rejoice, if you don't grieve, if you don't yearn, and if you renounce good and evil, and you are devoted to the Lord, then you are dear to the Lord. So therefore, you have to abstain yourself from rejoicing, grieving, yearning, good and evil. Only then, and if you're devoted to the Lord, you reach the Lord. So it's not a small thing. It's a huge process that one has to go through. The third gem that I find is that Lord is knowledge, Lord is the object of knowledge, and Lord is the goal of knowledge. So everything is the Lord. And this again epitomizes what is mentioned in these 3 shlokas. The fourth gem, relevant to one of the shlokas, is that if you have lust, pride and false prestige, and lack of discrimination, you will get into impure action. So lust is mentioned as one of the 4 things that leads to impure action. The fifth gem that I find is when it says that if you are trapped in the network of illusions, then the demonic nature comes out, because the demonic nature is attached to sins and you're bound to fall in.
And he then further, the Lord further explains that there are only three gates to hell: lust, anger, and greed. To overcome these three, then you have possibilities of preventing yourself from going to hell. Right. So maybe we will try to resolve your this connection problem in next round. So we would like to stop here, and in next round our technical team will be in your contact. They will try to resolve this problem because sound is not clear proper, it's not proper. So गो सेवा के प्रकल्प के अंतर्गत गो रस का एक उत्पाद हमारे व्यूअर्स के लिए। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। सेकंड राउंड है, ब्रीफ राउंड रखेंगे, ओपन राउंड है, और साथ ही एक और चीज हम क्लियर कर रहे हैं कि ये जो श्लोक लिए जाते हैं वो एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए हैं। बाकी भारतीय सनातनी जो हमारी ज्ञान परंपरा है, हमारा नॉलेज ट्रेडिशन है, उसका ये हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। तो जो सेकंड राउंड होता है उसमें आप पूरे हमारी ज्ञान परंपरा के किसी भी बात को रख सकते हैं। ऐसा कोई हम ये नहीं उसमें ला रहे कि 4 श्लोक ही हैं, उसी तक आपको लिमिट कर दिया गया है। आप कोई भी बात जो हमारे ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई है, हमारी दर्शन परंपरा से जुड़ी हुई है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। ओपन राउंड है, कोई भी इंटरजेक्शन कर सकते हैं, और शुरुआत यदि हाथ उठा रही हैं राधा जी तो उनसे करा लेते हैं, फिर बाकी आप सब बिल्कुल ओपन राउंड है। क्योंकि हमें फीडबैक ये भी मिला है कि आपका नेक्स्ट राउंड भी वैसा ही हो जाता है, क्रम वाला, तो थोड़ा सा डिस्कशन में लाइए इसको। तो मैंने कहा ठीक है। कुछ राधा जी पहले कहना चाहते हैं? राधा जी कह लीजिए। जी सुभाष जी, अगर कह सकती हूँ तो आई वांट टू से दैट आज एक बहुत ही शुभ दिन है, दैट इज दैट वी आर सेलिब्रेटिंग तुलसी दिवस टुडे। और तुलसी माता का आज 25 दिसंबर को दिवस होता है, आज उनकी पूजा की जाती है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। हम सबको तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुलसी दिवस के दिन जैसे कि प्रथा चली आ रही है, ये 2014 से शुरू हुआ है ये तुलसी दिवस बनाना, तो अभी आजकल भी हम इसको बना रहे हैं। आज के दिन की प्रथा ये होती है कि सुबह गंगा स्नान किया जाता है, या फिर आप नॉर्मल वाटर से जो भी स्नान करते हैं वो करते हैं, और शाम को जो है तुलसी माता के आगे दीप जलाया जाता है और तुलसी माता की पूजा की जाती है। लेकिन शास्त्रों में एक चीज और है कि रविवार को और एकादशी के दिन ना तुलसी माता की जो पूजा है वो निषिद्ध है। तो आज का दिन ये सिर्फ एक रीजन की वजह से आज जो है, क्योंकि रविवार है और आज तुलसी दिवस आया है, तो तुलसी माँ पर आज के दिन जल नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये मान्यता है कि वो हरिप्रिया भी कहा जाता है उनको, और वो विष्णु भगवान के लिए हर रविवार और एकादशी को व्रत रखती है, निर्जल व्रत रखती है। तो रविवार को और अगर एकादशी को तुलसी माँ के आगे आप जल अर्पण करते हैं तो उससे वो गुस्सा खा करके सूख जाती है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन। जी, मैं गीता का एक जो 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, उसमें भी भगवान इन नामों की चर्चा करते हैं कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधः स्मृता। ओम, तत् और सत, ये तीनों शास्त्रीय नाम है ब्रह्म का, और उसमें भी ओम को सबसे पहले रखा है। तो इसके साथ ही योग सूत्र में भी जैसे पहले चर्चा हुई कि तस्य वाचकः प्रणवः, थोड़ा मैं जैसे प्रोफेसर दरभा जी ने थोड़ी बात रख दी, तो मैं अब थोड़ा सा चाह रहा हूँ लिबर्टी इसमें
शास्त्र की कुछ बात मैं ला रहा हूं, थोड़ा हो सकता है गंभीर हो, नहीं तो लेकिन गंभीर का ही थोड़ा मंच सा है टच हमारा। टच करना जरूरी है। तो योग सूत्र में सूत्र है तस्य वाचकः प्रणवः। वो जो ब्रह्म है उसका वाचक प्रणव शब्द है। प्रणव का मतलब ओंकार होता है। तो ओंकार का ही प्रणव जो रूप है ना, उसका जो उपासना की जो पद्धति है, इसीलिए प्रकर्षेण न्यूयते स्तूयते इति प्रणव, जिसके द्वारा हम उस पर ब्रह्म तक उपासना के माध्यम से जाते हैं, वह प्रणव है। और वह ओंकार जो त्रिमात्रिक ओंकार है, उसकी बात चल रही थी। तो एक ये है, और आगे भी सूत्र में दिया है तज्जपस तदर्थ भावना। आप ओंकार का जप भी करें और ओंकार के अर्थ की भावना भी करें, अर्थ का भी चिंतन होना चाहिए, जो अपने यहाँ श्रवण मनन और निधिध्यासन में ये बात आई है। तो ये एक पूरी भारतीय जो परंपरा है उसका ये एक तरह से मूल स्रोत है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति साधना के माध्यम से उस परम तत्व तक पहुंच सकता है। एक जो चर्चा चली, जो अक्षर की चर्चा चली कि अक्षर, जैसे प्रोफेसर दरबा जी ने भी बात उठाई कि अक्षर जो है वह हम अपनी वर्णमाला को भी अक्षर कहते हैं। तो वह अक्षर जो है वह क्यों अक्षर नाम दिया? क्योंकि जैसे पहले कहा गया है कि प्रत्येक वर्ण जो है उसको हमारे साधना पद्धति में मातृका शक्ति कहते हैं। और वो जो मातृका शक्ति है वह जितने हमारे चक्र हैं उन चक्रों में एक निश्चित वर्णमाला है, मूलाधार से लेकर और आज्ञा चक्र तक। तो वो जो वर्णमाला है, तो इसीलिए संस्कृत वर्ण का जब हम एक निश्चित क्रम और संख्या में हम प्रयोग में लाते हैं, उसका जप करते हैं या उसका ध्यान करते हैं, तो वो उस शक्ति केंद्र को एक तरह से उसको उद्वेलित करता है। और वो धीरे धीरे वो शक्ति एक्टिवेट होते हुए आप में वो जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण, इसका मतलब है कि आप में वो शक्ति जो है वो अपने मूल रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और अभिव्यक्त जब होता है तभी देखा जाता है कि जो साधक है उसमें कुछ अपरिमित शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और बढ़ते बढ़ते वो बहुत कम समय में बहुत चीजें करने लगते हैं, और अंत में फिर वो धीरे धीरे उस परम तत्व तक जाते हैं। तो एक तो अपनी जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला केवल साधना पद्धति में तो केवल वर्णमाला ही कोई यदि बोलता जाए, उसका जाप करता जाए, तो वो अपने आप में एक साधना पद्धति है। तो ये संस्कृत भाषा की ये महानता है कि अपने एब्सोल्यूट स्टेट में हर एक वर्ण है, और एब्सोल्यूट स्टेट में है इसीलिए वो डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड है, और वो एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो एक बात ये हुई, थोड़ा सा 1-2 मिनट में ले रहा हूं कि जैसे प्रोफेसर दरबा जी ने कह दी जो जहत अजहत और जहत अजहत लक्षणा है। तो ये जो वाचक और उससे होता है वाच्य, और उसी के साथ होता है लक्षणा से जो जुड़ा हुआ है वो होता है लक्ष्य। तो जो आदि शंकराचार्य जी ने या और ने जो व्याख्या दी है कि जब सर्वम खलुदम ब्रह्म है, और हम ये भी कहते हैं कि जो ओम जो पर ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है, तो विदिन सर्वव्यापक ब्रह्म ये अकार उकार मकार या कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उसमें अभिव्यक्त होता है। तो अभिव्यक्त होता है तो भाषा के द्वारा इसकी सिद्धि कैसे हो सकती है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे कहते हैं अयो गोलकः दहती, कि जैसे गर्म लोहा जो है वो जैसे जलाता है। तो गर्म लोहा जो जलाता है इसमें 2 बातें हैं, कि एक है जिसको कहते हैं अविविक्त। अविविक्त का मतलब है कि लोहा और अग्नि दोनों को साथ लेकर जब चलेंगे तो वहां पे भाषा के द्वारा वाचक अर्थ आता है, यानी वाच्य अर्थ आ जाता है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि मैं हूं, तो इसका मतलब पर ब्रह्म की का रूप भी है और उसमें जो जागतिक रूप है वह भी है। तो दोनों स्थिति में जो है वो उष्ण गोलक के द्वारा, अयो गोलक के द्वारा उसकी चर्चा होती है। तो 2 स्थिति है, बस मैं 1 मिनट में इसको संकेत मात्र कर रहा हूं कि
जैसे हम कहते हैं कि लोहे का गोला और आग ये जलाता है किसी को, लेकिन ये निश्चित है कि लोहा नहीं जला सकता है, जला तो आग ही सकती है। तो हम दो स्थिति में समझ सकते हैं कि लोहा, आग से युक्त लोहा जो है वो जला रहा है, तो ये हुआ अविविक्त, यानी संसार और ब्रह्म दोनों को लेकर हम वाचक पद ले रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि यदि हम चिंतन करते करते कि नहीं लोहा तो नहीं जला सकता, तो फिर जलाने का काम आग ही करती है, तो उसको कहते हैं ये लक्षणा से ही संभव है कि लक्षणा से आप क्या करते हैं कि जो लोहा है उसको छोड़ देते हैं और केवल अग्नि अर्थ को ले लेते हैं। वैसे ही जो तीन जो स्थिति है, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों से युक्त ब्रह्म है, ये ओम शब्द का वाच्यार्थ है कि जिसमें कि संसार भी है और ब्रह्म भी है। लेकिन जो शुद्ध चैतन्य है जिसकी अभिव्यक्ति संसार है, वह शुद्ध चैतन्य संसार नहीं है, ये भी निश्चित है। तो जब नहीं है तो फिर उसका अलग से कैसे ज्ञान हो? तो अलग से ज्ञान करने के लिए फिर जहद अजत लक्षणा का प्रयोग करते हुए कि संसार जो है वह उससे परे जो तत्व है उसमें संसार को छोड़ देते हैं और परम तत्व को हम ले लेते हैं, और वही तत्वमसि का अर्थ इसी के द्वारा निर्धारित करते हैं। और इसी से होता है कि मैं ब्रह्म हूं का मतलब मैं पहले स्टेट में संसार युक्त चेतना हूं, और फिर साधना करते करते कि मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। तो इस तरह से जो वाच्य है और लक्ष्य है, इसके आधार पे अर्थ का निर्धारण करते हैं। और बस ये भी साधना प्रक्रिया का एक रूप है। बस इतना मैं सिर्फ संकेत मात्र करना चाहता हूं। दरबार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर दादू साहब के पास चलेंगे। देखिए एक बार वॉइस का देखेंगे क्लियर हो गई क्या जी। दरबार। Yeah, just to add, I am happy that he has given an explanation. Of course, जैसे झा साहब ने बोला ये बहुत गंभीर बात होता है and it may take one full episode. But just to touch it, though he has given one example, normally in वेदांत परिभाषा में 2-3 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, गंगायाम घोषा and शोनो धावती, and the third one is सोयम देवदत्तः. These are the 3 examples typically given. Saha ayam devadatta. He is the same fellow. He is the same Subhash Sharma. Is he the same Subhash Sharma whom I met in Jaipur the other day? ऐसा बोलते हैं, हाँ यही है वो. So that's what he says. Same thing about the Tattvamasi also. You are that. The same fellow you are only. You are the same Atma which is the Paramatma. So that वो जानने के लिए लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ की जरूरत होती है. बट नॉर्मल परिभाषा में, नॉर्मल कोलोक्वियल अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है ओम का, स्पेशली अबाउट ये उपासना पद्धति में पीपल विल टेक वाक्यार्थ इज अबाउट अपरा सिद्धि एंड देन लक्ष्यार्थ इज फॉर परा सिद्धि, ऐसा बोला जाता है। गुरु लोग वैसे भी शुरू में बताते हैं। तो पूरा ज्ञान होने के लिए वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का एंड वो जानकारी होना और सही सम्यक ज्ञान की जरूरत होती है। नॉट ओनली इनफ, इवन इफ यू प्राप्त करने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो महान आदमी है, परमहंसा है, वो समाधि में जाते हैं, आते हैं वापस, एंड देन जीवन व्यापार करते रहते हैं। वन स्वामी जी वॉज देयर इन समाधि एंड देन शिष्य इज ए कैंटेगरस फेलो, ही गोज एंड देन जस्ट कॉल्स हिम स्वामी जी वंस and he doesn't respond. He is there in the samadhi, no, because he's forgotten the whole thing. And then again he calls Swamiji, and then afterwards he's again third time, fourth time, fifth time, just Swamiji, Swamiji, Swamiji पढ़ा रहा है. And after that he gets disturbed and then said, यार कितने बार बोलोगे ये स्वामीजी स्वामीजी? नहीं, ये बोलो क्या है? कुछ नहीं स्वामीजी, एक्चुअली स्वामीजी ऐसा है कि you know स्वामीजी and बोलते क्यों नहीं? Already disturbed and then he gets extremely angry, at the 10th time. So that means even if one fellow who is supposed to be a Paramahamsa and a Guruji and a Rishi Muni, even after coming out of that Samadhi immediately also, he is falling for the temptation of Krodha, and then he gets angry with a simple provocation. That's why in Nityasthita, Prane Samsthapya, Yoga Dharana, and then staying there, that steadfastness is extremely important. That comes with Abhyasa Yoga and then Dharana. And hence we need to have Sadguru, Sadupadesha, Sadsadhana, and then, it's a long-term process. That's how it should be understood. And don't get carried away by the immediate siddhis or
immediate benefits just to project and then behave like a holier than thou. राइट जहाँ साहब भी कुछ इंटरजेक्शन चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पे थोड़ी गंभीर चर्चा यदि चाहते हैं तो इसको अगले एपिसोड में आगे बढ़ाया जा सकता है और बिल्कुल एकदम 1 to 1 इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये अपने पूरी ज्ञान परंपरा का सार तत्व है कि कैसे हम प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल जी, बस इतना। मैं भी वही सुझाना चाहता था कि ये बहुत ही तरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हम अगले एपिसोड में लेते हैं, ये जो एलैबोरेशन जो है आपका। ठीक बात है। दादू साहब सुन पा रहे हैं क्या? पहले प्रोफेसर भट्ट ने हाथ उठाया, उनसे बात कर लें, फिर मैं आता हूँ। अच्छा, भट्ट साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, सुभाष जी ने पहले ही बताया कि दिस इज एन ओपन एपिसोड, ओपन राउंड, ओपन राउंड. So I would like to take this entire discussion to a totally different level, जो कि विज्ञान से आती है. For last more than 2 decades, I have been trying to correlate my own experiences in sadhana of Kundalini Jagrati and Samadhi का अनुभव जो मैंने बहुत बार लिया है, all that. I am trying to connect it with neuroscience. And I have been able to interpret a lot of things that are mentioned in Tantra Vidya, like 3 नाड़ियाँ होती है, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, उसमें से कुंडलिनी जागृत होने के बाद ऊपर जाती है तो exactly क्या होता है, etc. etc. So I have been able to correlate the word and the meaning and the Shakti that is involved in the word prana with neuronic impulses, and it is possible to explain. The point is, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, it is extremely deep, and even Vijnan is included within that. It is not separate from modern science, and so I am trying to connect this whole experience which I have had of this Kundalini Jagruti and the sadhana with neuroscience, but this is a very deep subject, and I'm just mentioning it here, and we can have an entirely separate episode on that sometime later. Thank you. Right. तो मॉडर्न साइंस तो सिंपल बैक्टीरिया से बता रहा है, यहाँ तो ब्रह्मरंध्र की बात चल रही है ना, चक्कर ये पड़ रहा है। दादू साहब, I just एक बार दादू साहब का राउंड करवा लेते हैं, क्योंकि पिछली बार कंप्लीट नहीं कर पाए। प्लीज आपके पास आते हैं। प्लीज मैं शर्मा जी ऐसा करता हूं, जो मैंने 6 जेम्स के बारे में जिक्र किया था. If I am audible, then I'll repeat it very quickly. I think it's audible now. It's all right. Okay. Number 1, what I mentioned was that if I look at the 3 shlokas, I get 6 gems out of them, which are mentioned elsewhere in Gita also. One is that even an offensive person, if he devotes himself completely to Vasudeva, he can transform himself. So it is not that, you have to be pious only to be able to reach Brahma. Secondly, if you don't rejoice, if you don't grieve, if you don't yearn, and if you renounce good and evil, and you are devoted to me, the Lord says, then you are dear to me. So this process of not rejoicing, grieving, yearning, renouncing good and evil, and devoting to the Lord, only then you are able to reach the Lord, is a huge complex process, I feel. The third thing he mentions is that what is knowledge? Lord is knowledge, Lord is the object of knowledge, and Lord is the goal of knowledge. So everything is Lord. And this is again the essence of what is being said here. The fourth thing that I find with respect to lust is lust, pride, false prestige, and lack of discrimination leads to impure action. So lust is one of the causes of impure action.
The fifth gem that I found was that if you're trapped in the network of illusions, people with demonic nature are attached to sensory pleasures and fall into hell. I think your sound is also trapped in the network. Yeah, Anyway, it's not audible too well. It's not working. In next episode, we will I try. think there is We'll a get a first trial with this technical yeah. trees, and then next episode I में आप just wanted कहिएगा. to नाटकनी साहब I just wanted to cite a beautiful song which we have been talking about. You know, तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिकारी, हूँ प्रसिद्ध गा के पातकी. बताइए, हूँ का मतलब मैं, हूँ का मतलब हाँ. मैं, गा के बताइए. और गा के बताइए. सही बात गा है. के अच्छा दरबार साहब if he is calling for pest control of your studio. No, it's not. You are a good singer. You are a good singer. You Yeah. have depth knowledge of तू our classical music. दयालु दीन हूँ, हूँ दानी हूँ भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, हूँ तू दयालु हीन हूँ. Now, you know, Jha Sahab has already beautifully alluded to this, that तत्वमसी है, फिर भी हमारी टेंडेंसी है कि भी आत्मेव रिपुरात्मन बनते हैं हम लोग. While there is आत्मेव आत्मो बंधु होते हुए भी we behave आत्मेव रिपुरात्मन. So, as an antidote to that, where suppose I am poor, I am lustful, I am angry, I am stupid, or whatever it is, the antidote to that for me personally has been a very, very beautiful verse in the Bhagavatam. And I would like to share that verse with our learner audience. Namo akinchana vittaya nivrutta gunavruttaye. So, he says, all obeisances to you unto the property of the materially impoverished. जो हम लोग हीन है, भिखारी जो हैं, उनका ही पहला राइट ये नारायण परतत्व पर है. Then आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः. This is ostensibly said by Mata Kunti in the Bhagavatam. So, Atma Ramaya. So, this is what is the real principle, that actually you are him. But because of the Maya, because of Guna Pravrittis or whatever, but the Lord itself, the Chetana itself is Nivrutta Gunavruttaye. And Atma Ramaya Shantaya. So once you go to that Paramapada, then this tendency of self-abnegation, self-abuse, or I am unworthy, I am bhikari, I am prasiddha pataki, ये सब फिर मिट जाता है, and then you become kaivalya pataye namaha. So you yourself become kaivalya. All bhedbhav disappears. So this is the great paradox of our Sanatan tradition, which is constantly assuring the sadhaka that you are not a lost cause totally. That with the right means, with the right guidance, there is hope for everybody in this boat of life. Thank you. Right. Anybody else? जा साहब कह लें, Okay, दरबार जा साहब साहब। कह लें. जी जा साहब. नहीं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि गीता में भगवान बार बार ये बता रहे हैं कि वेदवित मतलब है कि वैदिक परंपरा का जो हजारों हजार वर्ष का जो ज्ञान है, और ज्ञान केवल तार्किक ज्ञान नहीं है, अनुभवात्मक ज्ञान है. तो इसलिए जो ऋग्वेद है उसके ऋषि भी कहते हैं कि इदम नमः ऋषिभ्य पूर्वजेभ्य पूर्वेभ्य पथकृतभ्य, कि हमसे पहले के ऋषि ने जो हमें मार्ग दिखाया है
उस मार्ग पे चल रहे हैं। और ऋषि का अर्थ ही है जिन्होंने अनुभव किया है, ऋषि दर्शनार्थ। तो पूरी ट्रेडिशन जो अपनी है वो लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, अनुभव पर ही आधारित है। इसीलिए अनुभव की एक परंपरा है। इसीलिए जैसे कि राधा जी ने भी कहा कि, और दरवाजे के आचार्यवान पुरुषो वेद, उस अनुभवात्मक स्थिति तक पहुंचाने के लिए एक ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की आवश्यकता है। और चूंकि ये हजारों हजार वर्ष का अनुभव का एक स्वरूप है जो हमारे यहाँ गीता के रूप में प्रस्तुत है, इसीलिए अनुभव का जो स्केल होना चाहिए कि अनुभव कैसा है, इसके लिए वो शास्त्रीय प्रमाण है और गुरु के सानिध्य से उस स्थिति को पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य प्रकार का अनुभव है तो उसको भी जांचना जरूरी है कि क्या वैदिक परंपरा के अनुकूल वो अनुभव है, वो साधना पद्धति जो है वो हमें किस स्थिति तक ले जा सकता है, और क्या वो वही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है। तो ये सब बातें भी ध्यान में रखना है, जो बार बार भगवान कह रहे हैं कि वेद मूल रूप से प्रमाण है यहाँ। तो मैं सिर्फ ये संकेत करना चाहता हूं कि बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो ले कहाँ जा सकती है और उसमें प्रमाण क्या है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य अवस्थित हो, शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र प्रमाण इसलिए है क्योंकि शास्त्र ही ये तय करेगा कि आपका अनुभव किस स्थिति तक पहुंचा है, और उसमें गुरु का सानिध्य चाहिए जो उस स्थिति तक ले जाते हुए शास्त्र के अनुसार आपको वहां स्थित कर दे। बस मुझे यही संकेत करना था कि इसलिए भगवान ने यहाँ लिख दिया है कि वेद विदो वदंती। तो वेद जो है उसकी परंपरा को ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए, और गीता जो है वो वेद का निष्कर्ष है। इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम, कि वैदिक परंपरा का ये सार चीज है, और उसमें जो विधि बताई गई है वो वेद के द्वारा प्रतिपादित विधि है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें साधना पद्धति में आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं ये थोड़ा सा संकेत। नाडकर्णी साहब, ये पैनलिस्ट की मांग है कि आज नाम स्मरण का जो इसमें जिक्र आया है आज, तो नाम स्मरण का कोई भजन आपसे ये पैनलिस्ट भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। आचार्य राधा जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर दरबा साहब कुछ कहेंगे। हाँ, पहले अब राधा जी कहिए। चलो राधा जी बोल रहे हैं, जब तक आप अपनी स्मृति को ले आओ, दरबा साहब बोल रहे हैं, फिर आप इसी से कंक्लूड कर देंगे आपके भजन से। सर तैयार है, लेकिन आई एम ईगर टू लिसन टू राधा जी फर्स्ट। इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो लास्ट में कंक्लूड आप ही से कराएंगे। जी जी राधा जी। सर ठीक है, ठीक है। I am just going to add it to what Jha Sahab said, that Srimad Bhagavad Gita ji is not a read. It's not a book that you can just read and go ahead and say that yes, I am a learned fellow. You cannot do that. It has to be done through a proper way. There is a proper means. There is a parampara. There is a process where there is a guru, there is an acharya, there is a proper gurukulam or a tradition which we have to follow. There are rules and regulations which are to be followed. You have to be on a sattva more level to go through the entire process of studying the Bhagavad Gita. It's not a read. Please understand this is for all the viewers. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। दरबार साहब। Yeah, same thing. Just to reinforce what Jha Sahab said, and also, with all my humility, I want to submit to Dadoo Sahab. If I have heard you right, your first gem, I think you need to re-refer and then correct it in the sense from the source. You need to look at it because it's utna asan nahi hai. Because even if you don't follow the process, that's why I think Jha Sahab has come in. Then I wanted to reinforce by saying that Tasmat Shastram Pramanante, that is one thing. And even Adhato Brahma Jignasa, when he starts, the third one says Shastra Yonitvat. That is the third Brahma Sutra talks about. So Shastra is the Praman and Veda Ikalam Dharma Moolam. There is no other way. Nanya Pantha Ayanaya Vidyate or Vidyate Ayanaya. There is no other shortcut. There is no other way. One has to go through this process. It's not easy that you don't have to go through this and then ब्रह्म को जान सकते हैं, कोई भी जान सकता है,
ऐसा बोला नहीं जाता, बिकॉज एनीथिंग इन लाइफ आल्सो इज लाइक दैट. वी कांट डू ए PhD straight away just like that. You have राइट, to go through that. We have to ओके, stand in the पॉइंट आ गया queue to आपका, reach a particular thing. That's all पॉइंट it इज is. वेल टेकन। And Vithal ji, I am so हाँ जी, happy to tell you that I was an alumni of Tata Institute and Vimla ji को जानता हूँ. अरे क्या बात है, क्या बात Thank है। you. 30 years back I passed out. I did my management from Tata Institute. तो भजन सुनिए आप। या एक्चुअली जो जो नामस्मरण का जो बात कर छेड़ा गया है, तो इफ यू विल परमिट मी, देयर इज ए 120-year-old antique harmonium I am playing right now. वाह, Because without a sur, क्या गाऊं मैं, you know. But गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, हरे गोपाल राधे गोविंदा, हरे गोपाल राधे गोविंदा, बाल मुकुंदा राधे गोविंदा, बाल मुकुंदा, बाल मुकुंदा, बाल मुकुंदा, बाल मुकुंदा राधे गोविंदा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। फैंटास्टिक। कंक्लूड कर रहे हैं। Actually, I'm a little worried. You know, I don't want the studio to be deserted because of my song. नो नो, नेक्स्ट टाइम से हम बात कर लेंगे पहले आपसे। वो एक्चुअली आपका डिवाइस का उसके पास में नहीं है ना, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। बट एनीवे, नेक्स्ट राउंड में अभी एक फीचर बन गया है। I'll refine it a little better, I think because so. you know there is this बद्री विशाल जी का भी एक, you know, the Lord नाम संकीर्तन में इतना मधुर रस भरा है Yes. कि with that alone you can get into a state of high, you know. Yes. With, Definitely, definitely. जैसे That is true. That is true. जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते फीचर, थे, इसको एक फीचर के रूप में लेंगे और पहले हम बात करेंगे। इसका थोड़ा सा टेक्निकली सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपके यहाँ। जहाँ साहब कुछ फाइनल कमेंट करना चाह रहे हैं? जी जहाँ साहब। नहीं, मैं नाडकर्णी साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिजर्टेड नहीं हुआ, ये हरा भरा हो गया। हाँ। You're very kind, sir. You're very kind, and I'm very grateful. You know, actually, जो आपको मैं we had met at Banaras, you know, at that संगोष्ठी at Madan Mohan Malviya Center में, and we had gone to that crafts museum. So I have some pictures. I'll send them forward to you. You are in a dhoti and kurta with me. Okay. बहुत ही मेमोरेबल वो जर्नी थी। नाडकर्णी साहब, हम सिंहस्थ कुंभ में उज्जैन में भी हम साथ थे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो दरभा जी कह रहे थे, यू नो, एक्चुअली ये सत्संग है। हाँ, यू नो, दीज आर वी आर ऑल पीपल, वी आर एब्सोल्युटली, देयर इज नो ऑपोजिशन, और ये मेरा तेरा ऐसे कोई डिवीजन ही नहीं है इसमें। This is our good fortune that we are with these mumukshus and sadhakas like this. So I may not have said it formally, but it's a great honor for me to be part of this beautiful Sangosh. Absolutely, same here. सर्दियों में हमारे जयपुर में एक महामूर्ख सम्मेलन भी हुआ करता था, तो मेरे को आप उस कैटेगरी में रख लीजिए। बिल्कुल। कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे नई दिल्ली से JNU के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर रामनाथ जी झा, ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, प्रोफेसर श्रीराम जी दरबा बेंगलुरु से, प्रोफेसर अनिल जी भाटे USA से ज्वाइन किए हुए थे हमें,
और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे। श्रीमान के दादू जी हमें नई दिल्ली से ज्वाइन किए हुए थे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।